So we have received one question. So friend is asking, in our first dua, when we say guide us to the right path, the question is, so the right path is who are those favored ones and who are the cursed ones? Okay. So सबसे पहले I wanted to make sure that we understand the translation of this line. اهدنا الصراط المستقيم. Please do not say in your translation or in your understanding, guide us to the right path is incorrect translation. Guide us on the right path is correct translation. मैं इसको उर्दू में रिपीट कर देता हूं. इहदिना सिरातल मुस्तकीम का मतलब होता है हमें सीधे रास्ते पर चला, ना कि सीधा रास्ता दिखा. क्योंकि अगर हम कहते हैं कि सीधा रास्ता दिखा, मतलब आज भी हम सीधे रास्ते पर नहीं है. Do you understand this? To on, huge different. First in English again. Incorrect translation is guide us to the Sirat al-Mustaqim. Meaning you are saying, I'm not on the right path, guide me to the right path. The correct translation is, and the understanding is, guide us on, to nahi, on Sirat al-Mustaqim. क्योंकि हम Sirat al-Mustaqim पर है, as Ismaili, as the follower of the Imam, now guide us on this Sirat al-Mustaqim. Continue to guide us on this Sirat al-Mustaqim. So that was first part of your question. Now your second part, who are the one who has been bestowed the highest? वो कौन है जो इनाम याफ्ता है? इनामी याफ्ता कौन है? Who are the chosen one? कुरान के अंदर आप देखें, सूरह आले इमरान आयत नंबर 33. We have chosen Adam, we have chosen Hazrat Nuh, we have chosen Ibrahim and his al, the Imaman, we have chosen Imran and his al, the Imaman. आपने देखा, आपके सवाल का जवाब यहां पर था कि Imam are the initial and foremost up front, are the chosen one. तो हम यहाँ पर दुआ करते हैं कि या मौला हमको इमामों के पीछे पीछे, पैगंबरों के पीछे पीछे, हुज्जतों, पीरों और दाइयों के पीछे पीछे चला, क्योंकि वो chosen है. It was already weakened, but running alongside this tax rise, which is going to really hurt working people. क्योंकि वो chosen है. And do not, हमको उस रास्ते पे नहीं चला कि जो रास्ता गलत जगह पर चले गया, कि जो रास्ता हमको इमाम से दूर ले जाए, खुदावन ताला के नूर से दूर ले जाए, गलत रास्ते पे ले जाए, हमारे तरीके से हमको अलग कर दे, उस रास्ते पे हमको नहीं चलाना. तो कौन सा लोगों का रास्ता हुआ? Those people who have left Imam, हमको उसके रास्ते पे नहीं चलाना. जिन्होंने इमाम को छोड़ दिया है,
उसके रास्ते पे हमको नहीं चलाना, हमको उस रास्ते पे चलाना जिस रास्ते पर इमाम हो और इमाम के मानने वाले हो, यानी कि पीर और दाई जिस रास्ते पे चले हमको उस रास्ते पे चलाना। Thank you, very good question, and I hope you have corrected the translation of this verse. Ji. So we have another question. Actually, two questions. So if you allow me, I can merge it. So one friend is asking, what does Ali Allah mean? Another friend is asking, what is the difference between Ali Allah and Aliullah? So let's take the second question first, because it is a grammar thing. Ali, Wali Allah, Ali is the friend of Allah. Ali ul Allah, Ali is from Allah, and Ali Allah. You see, there are three different words, the grammar they will use. Ali Wali Allah, Ali ul Allah, Ali ul Allah, and Ali Allah. Ali is the friend of Allah, Ali is from Allah, and Ali is Allah. These are the three stages of ilm and iman. तीन तरीके से हम अली अल्लाह कहते हैं, और ये तीन ईमान और इल्म के दर्जात हैं। पहले दर्जे पर हम अली वली अल्लाह कहते हैं। अगर आज हम अली वली अल्लाह कहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पहले दर्जे पर आ जाते हैं कि जहां पर हम अली को अल्लाह का दोस्त मानते हैं। फिर अली अल्लाह, फिर हम कहते हैं कि अली अल्लाह की जानिब से है, ये दूसरा दर्जा है। फिर हम कहते हैं अली अल्लाह कि अली ही अल्लाह है। इसका मतलब है कि हम अब तीसरे दर्जे पर पहुंचे हैं, ईमान और इल्म के। इसीलिए मौला ने फरमाया कि जब तक आप अली अल्लाह नहीं कहते हो दुआ ना पढ़ो। आपने देखा, और हाजिर जामे के अंदर मौला ने, आप दुआ की किताब उठाकर पढ़ लें अच्छी तरह से, दुआ की किताब के पहले पेज के ऊपर जो फरमान है, आप दुआ के मानी नहीं जानते हैं तो दुआ ना पढ़े। हाउ स्ट्रेंज इज दिस कि हम इतने सालों के बाद इस बात को सीखने की कोशिश करते हैं। एक, अगर आप अली अल्लाह नहीं कहते तो दुआ ना पढ़े। दूसरा, अगर आप दुआ के मानी नहीं जानते तो दुआ ना पढ़े। You see, Mola is telling us that you must have a core, firm belief and understanding of your tariqah and what you are reciting your dua. Because if you don't understand your dua and if you don't understand the imam, then what is the return? तो फिर क्या हासिल है अगर हम अपनी दुआ को ही नहीं समझते हैं और अगर हम अपने इमाम को ही नहीं समझते हैं। Ali, Allah, the second question you had, meaning that Ali is Allah. On what basis? On what basis? On the base of the Noor that Ali has, the Imam Zaman has, the Noor of Allah, and he is the soul of Allah. And you already know the example I have given earlier. आपका नाम अगर करीम है, आपके अंदर रूह जो है वो करीम की है, तो what else would I call you but करीम? अगर इमाम के अंदर खुदा की रूह और खुदा का नूर है तो उसको मैं क्या बुलाऊंगा अली अल्लाह के अलावा। जी। Okay.
So the friend who asked the first question about the guidance on the right path, friends asking, who are those cursed ones? Yes, I thought I had explained. Let me explain again. There are two kinds of cursed one. आपने दुआ के अंदर देखा. So let me repeat the line from the Surah Al-Hamd, from the dua, and you will notice it's not the two kind of people, but three kind of people. اهدنا الصراط المستقيم والصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. तीन किस्म के लोग हैं. एक जो इनाम याफ्ता है, दूसरे जो ईमान रखते हैं लेकिन अंदर बैठकर खराबी करते हैं, और तीसरे जो बहुत ही दूर के भटके हुए हैं. तीन किस्म के लोग. हम कहते हैं हमको पहले वाले के आगे और उसके साथ और उसके पीछे चलाना, ना कि वो अपने वर्ड सुना होगा मुशरिकीन और आपने वर्ड सुना होगा काफर. What is the difference between मुशरिकीन and काफर? मुशरिकीन वो होते हैं जो अंदर बैठकर शिर्क करते हैं. काफर वो होते हैं जो सिरे से ही मानते नहीं है. कौन से अच्छे हैं? कम से कम काफर कहता है कि मैं मानता ही नहीं हूं, बात खत्म हो गई. लेकिन मुशरिकीन जो अंदर बैठकर खराबी को फैलाते हैं, अंदर बैठकर वो खराबी को फैलाते हैं. ना ही हमको उनके साथ रहना है जो दिखने में मुसलमान, दिखने में इस्माइली हो और फिर अंदर बैठकर शिर्क करे, अंदर बैठकर बुराइयों को फैलाए, अंदर बैठकर खराबियां करे. और ना ही हमको उनके पीछे जाना है कि जो बहुत ही दूर के भटके हुए हैं. तो आज बहुत के दूर के भटके हुए कौन है? आप सोचे आज दूर के भटके हुए कौन है? सबसे पीछे 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 हम जाएंगे तो वो लोग जो आदम के बाद हजरत नोआ को नहीं माने. मैं किसी मजहब का नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही अंदाजा कर रहे हैं कि कौन सा मजहब है दुनिया में जो सबसे पुराना है. जिन्होंने आदम को माना, हजरत नोआ को नहीं माना. हजरत नोआ को माना, इब्राहिम को नहीं माना. इब्राहिम को माना, मूसा को नहीं माना. मूसा को माना, ईसा को नहीं माना. ईसा को माना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना, अली को नहीं माना. अली को माना, बाद में आकर इमाम को छोड़ दिया. आपने देखा कि ये है वो जो दूर के भटके हुए हैं. हमको उसके पीछे नहीं चलना है, हमको सिर्फ उनके पीछे चलना है जो आज भी हाजिर इमाम को मानते, जानते, समझते हैं और इनके रास्ते पे चलते हैं. उसके साथ साथ उनके पीछे पीछे चलना है. जी. So another question, when Hazimam says we are all always in his heart and thoughts and prayers, is that an example of how he cannot be an ordinary human being? Very good understanding. बहुत खूब. जब मौला फरमाते हैं कि आप हमारे दिल और दिमाग में हर हमेशा है. How fortunate we are. Imam is a living paradise, a living boat of salvation, a living house of salvation. And if we are in Imam's heart, where are we? We are in paradise today, right now. We are in the boat of salvation today, right now. This is the prayer and the wish of the Imam for his follower. Would you like to stay in his heart
and his mind. And how do we stay in his heart and his mind? क्योंकि जब हम अच्छे काम करते हैं और जब हम मौला को याद करते हैं तो मौला भी हमें याद करते हैं. We are in his heart. जब हम बुरे काम करते हैं और इमाम को याद नहीं करते हैं तो हम us खुद, we ourselves remove ourselves from his heart and thought. आपने देखा is a two-way street. When we remember him, he remembers us. When we love him, he loves us. To be in his heart, meaning in his paradise. Being in his mind, meaning being in this boat of salvation. He has given us this promise, his love, his wish, his will to be with him always. We have to make sure we never get disconnected from it. Very good line of thought. G. So another question. After we die, what other tasks are given to a soul in the spiritual realm apart from doing ibadat? I am just curious that there must be other tasks given to a soul to serve others. So this is a very good question, and this shows me that not only we are thinking of today, but we are thinking of our soul for tomorrow. There will be two things, but I'm going to divide this into two different kind of people, two different kind of souls. Two things, ibadat and ilm. Don't forget the ilm. Ruh wali ruh darja ba darja taraqi karti hai. When we die, and if we have not, if we die and if we have not reached to the highest level, then we will have a two task, ibadat and take knowledge. Because without the knowledge, our soul will not be able to increase in the rank to reach to the highest realm. This is the first kind of Jamaat, first kind of soul, first kind of people. Then there will be second kind of people. And you will see the logic behind this answer. And them also will have a two task, ibadat and ilm. But the difference would be that this second group of people will be giving ilm to those who did not pay attention or who had not completed their classes, their ilmi journey, their spiritual journey in this physical world. Then those will be responsible for the talim, the knowledge, and the teaching of those souls who had not finished their classes, their talim in this world, in this physical world. So there will be two kind of people. They both will be doing same thing, ibadat, ilm. One will be doing ibadat and ilm for learning purposes. One will be doing ibadat and ilm for teaching and blessing purposes. What a beautiful question. Thank you for asking. G. So another question. What is the meaning behind multiple deaths? Is it dying spiritually in stages? If so, are there signs when these different deaths occur? Okay, I'm not sure I fully understand the question, but let me try. At the end, if I did not answer your question, please do ask again or rephrase your question again. Multiple tasking in this world. What is multiple tasking in this world? For example, right now, what are we doing? We are giving the nazarana of time and knowledge, combinedly multitasking. While we are cooking, what are we doing?
If we are reciting Ginan, we are saying tasbih, or we are thinking of our children. So we are doing khidmat to our children. We are doing tasbih, remembrance. We are reciting Ginan for the love of Imam. And we are cooking, multiple tasking. Just like that, after we die, we will be doing multitasking of ilm and amal. And amal part is to do with ibadat. Multitasking, ilm and amal. So on the spiritual side of us is that we always should be doing ilm and amal. And you notice the ilm is in front, amal is in the second. Because without the ilm, the amal would not mean anything and would not benefit you too much. Because with the ilm, you will see and understand what is the correct action, correct course of action, correct path, and what is the shortcut. And that comes with ilm. Ilm and amal goes hand in hand. It's like a two chapu of the boat. You need both of them to row a boat. G. So I think, sir, the friend's asking, that the multiple deaths. So in the Farman, Maula Ali killed Nusayri multiple times. So that's what I think. G. I believe I had explained that during the class. So let me repeat this in English and Urdu both. When a Momin goes on a spiritual journey, he must go through death multiple times. To account, it says a Momin go through 70 death before he become truly alive in the Imam. उर्दू में जब एक मोमिन सालिक इबादत करता है और रूहानी सफर पर चलता है तो वो 70 मरतबा मरकर जिंदा होता है इससे पहले कि वो इमाम के अंदर फना हो जाए. Those are the 70 steps or the journey of the purification, or 70 wells. 70 पर्दे हैं हमारे और इमाम के दरमियान में. इस जिस्म के ऊपर 70 वेल्स हैं. हर मौत के अंदर एक पर्दे को हटाया जाता है. जब जब एक पर्दा हटता है तो एक अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर दूसरा पर्दा हटता है, सेकंड अंडरस्टैंडिंग आती है. On and on and on, you remove all the veils, and then you have the highest understanding, the marifat, the recognition, being one with the Imam. That's what it means by multitask or multi-test or multi-death or multiple removing of the wells. Good question. Thank you. So okay, I think there's one. It's a friend saying, I saw a dream that the hell for a departed soul who did not accept Maula's Farman will be engrossed in their own worldly emotions, and people will talk bad about the soul, and they will be able to hear worldly people talking about him, and it will also hurt this soul in the spiritual world. So, in nutshell, what you saw, so shall you reap. Your worldly actions will hurt you in the spiritual world too. Can you shed some light on this?
I would like to say that dream is very personal and the tawil of the dream is very personal. I would ask this gentleman or the lady who's asking this question to please contact me personally, because the tawil of the dream is personal and it must be dealt on one-on-one. So that would be my recommendation. In generically, without going into this dream and doing the tawil, generically, that is true that our action are reflected on our soul. Our good action will give us a better fruit of the soul, and our bad action will give us trouble and will take us backward in the journey of the soul. So that would be our generic answer to this question. But if this person like to know the detail of it, then I would recommend that he contact or she contacts me personally and we can discuss the dream. Okay, so we have one more question. Why Hazir Imam says Khana Vadan 3 times? Physically, spiritually, and intellectually. You must have noticed that we also say the Tobo Tobo, we do everything in the circle 3 times because there are 3 stages of our being, and that is physical, spiritual, and intellectual. So when Imam says Khana Vadan, compared to when Mukhi Sahib says twice. So we will include that part in this question. Imam says, I am able to flourish and give you the blessing for your physical home, Khana Abad, may your home be flourished physically, spiritually, and Nurani, intellectually. Imam says that. When Mukhi says Khana Vadan, he says it twice, not 3 times, because he has authorized to do sifarish, recommendation for your physical and your spiritual, not your Nurani. Ruhani, yes. Nurani, no. He only recommend you for the 2 Khana Vadan, your physical blessing, your spiritual blessing. And from there, you have to contact and go into the Imam's Huzur and ask for the 3rd one, the Nurani, the intellectual blessing. So Imam gives you 3 Khana Vadan for 3 of your being, and Mukhi Sahib can recommend up to 2, your physical and your spiritual. G. So we have one more. Can anyone reach the highest stage without Isme Azam? No. Okay, so we don't have any more questions. So the last question, did you notice I did not go into detail because question is incomplete question. That's why I left it with single word answer, no. G. Can I ask one question?
یا علی مدد مشنری صاحب. یا علی مدد. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، دعا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں جو آیتیں ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم جب بولتے ہیں مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کی مالک کی تو بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ قیامت کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے. یہاں پہ کر رہے ہیں دین کے مذہب کے دین کے دین مذہب کے دین کا ٹائم. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے پلیز کلیئر کریکٹ کیجیے گا. میں نے یہ جب اس کو پڑھا اس آیت سورہ فاتحہ، کیونکہ سورہ فاتحہ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے پورے قرآن کے اندر میں، اور بار بار بولا گیا، اور اس کو ہر دعا کا ہر اسٹارٹنگ کے ہر کوئی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹی اس کی اسٹارٹنگ کے لیے یہ بولا گیا کہ اس کو پڑھو. تو میں نے جب دیکھا تو اس کو میری جو انٹرپریٹیشن یہ لگ رہی ہے مجھے کہ یہ جو ہے وہ اگر اس کو دیکھا جائے تو بولتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. پھر بولتے ہیں کہ دین کے مذہب کے دین کا مالک ہے. تو یہ مذہب کے دین کا مطلب یہ ہوا کہ میرے خیال میں کہ جب ہم لوگ نے، ہماری تمام روحوں نے جب ان سے اس وقت وعدہ لیا تھا خدا نے ہم سے کہ کیا میں تمہارا خدا ہوں کہ نہیں، اور کیا تم دنیا میں جا کر وہ اچھے کام کرو گے کہ نہیں. تو یہ جو وعدے کا دن ہے یہ مذہب کے دین کا، اور اس طریقے سے مذہب یہاں سے اسٹارٹ ہوا، کیونکہ اس کے بعد کی آیتیں اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کے بعد بولتے ہیں مالک یوم الدین، ہم تیرے ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، ہمیں سیدھے راہ پہ رکھنا، سیدھا راہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اعلان کیا، نہ کہ شیطان کا، کیونکہ اس وقت تک شیطان کنٹینیو ظاہر ہو چکا تھا. تو بولا کہ نہیں، اس سے ہٹا دینا مجھے، اور نہ ہی گمراہوں کا، تاکہ ہم تیری راہ پہ رہے. تو یہ ہم اس سے وعدہ تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن ہم اس سے کنفرمیشن بھی اس سے لے رہے ہیں خدا سے کہ ہمیں تو بھی ہدایت دینا تاکہ ہم تیری راہ پہ رہے. اگر میرا انٹرپریٹیشن غلط ہو تو پلیز مجھے کریکٹ کرنا. انٹرپریٹیشن تو بعد میں آتا ہے، لیکن آپ کا جو ٹرانسلیشن تھا اس میں تھوڑی غلطی ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. آپ کسی بھی قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی ٹرانسلیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ سنی کا ہو، شیعہ کا ہو، بوری کا ہو، کسی بھی، ایون کہ کسی ادر دین مسلم کسی نے ٹرانسلیشن کیا ہے، فار ایگزامپل پکتل کا اٹھا کے دیکھ لیں آپ، تو آپ کو مالک یوم الدین کا ایک ہی ٹرانسلیشن ملے گا، قیامت کے دن کا مالک. تو سب سے پہلے تو ٹرانسلیشن کی کریکشن ضروری ہو گئی. اب آ جائیں ورڈ دین، ڈے. قرآن کے اندر آپ کو جہاں جہاں پر بھی دن کا ذکر ہے، اس دن، وہ دن، آخرت کا دن، آپ کا دن، خدا کا دن، جہاں پر بھی the word day comes، وہ سب کے سب قیامت کے دن کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کیوں کہ ہر لیکن مذہب اس کی میں، جگہ یہ بھی ایکسکیوز می، لیٹ می فنش پلیز. الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن کو تمہارے لیے مکمل لیٹ می فنش پلیز. بات ہوتی ہے. لیٹ می فنش پلیز. ہر ایک مذہب کے اندر، چاہے وہ ہندو مذہب ہی کیوں نہ ہو جو سب سے پرانا مذہب ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، ہر ایک مذہب کے اندر ایک چیز کو مانا جاتا ہے اور اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن. ہر مذہب کے اندر. اگر ہم یہیں سے غافل ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہم کو یہی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن کی کیا اہمیت ہے. سورہ الحمد جو ام الکتاب کہلاتی ہے، ام الکتاب، دی مدر آف دی بک، دی مدر آف دی قرآن. اگر ہم کہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر قیامت کا ذکر نہیں ہے،
तो बहुत बड़ा मसला यहाँ पर पैदा होगा, क्योंकि उम्मुल किताब, द मदर ऑफ द बुक, द मोस्ट रिसाइटेड सूरा, वो क़यामत के कॉन्सेप्ट से खाली रह जाएंगी, वो क़यामत के अकीदे से, क़यामत की तालीम से खाली रह जाएंगी। जबकि सूरे अल-हम्द पूरा का पूरा, यानी कि 7 आयत क़यामत के बारे में है। मैं आपको छोटा सा ये 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूं, then I will recommend, if you have a time and if you like to learn, listen to Nachi's the meaning of the dua, especially the meaning of the first part, especially the meaning of Surah Al-Hamd, especially the meaning of Bismillah, and especially the meaning of Ba. And you will come to an understanding of the dua. Because without knowing the meaning of the dua, and that cannot start without Surah Al-Hamd, और अगर सूरह अल-हम्द में हमने गलती कर दी तो फिर बहुत बड़ा मसला है। So in short, in the name of Allah, which Allah? I don't even know Allah. Mullah Ali says, I will never pray to Allah which I have not seen. I don't know which Allah. So for which Allah would I start my prayer with? The one who is Rahman and Rahim. Who is Rahman and Rahim? Have I seen my Rahman and Rahim? And that is the Imam Zaman. Because again, I would not ever pray to Allah, the Allah I have not seen. How can I start in the name of Allah, which I have not seen? Rahman and Rahim are the 2 names, the attribution of the Imam of the time. So I start my prayer in the name of Ali Allah, who is Rahman and Rahim, and He is the Lord of the time of Qiyamah. He is the Lord of the time of Qiyamah. Because without the concept of the Qiyamah, nothing is complete. No religion is complete. Another thing, if you like to do research, there is no more detail, there is no more understanding than the Qiyamah in the Quran and any religion, चाहे आप इस्माइली तरीकों को ले, इस्लाम को ले या किसी भी रिलीजियस को ले ले, पुराने से पुराना रिलीजन, क़यामत के बगैर कोई भी रिलीजन मुकम्मल नहीं. If that is the case, then without the mention of the Qaim, the Imam of the time of Qiyamah, Surah Al-Hamd would not be complete, nor our dua would be complete. In this surah, the mention of Malik Yawmiddin is the mention of the Imam of the time of Qiyamah, is the mention of the Qaim, the Imam of the time of Qiyamah. So I will leave it at this point. For further understanding, I will request you, humbly request you, take some time and listen to the meaning of the dua, especially the first part, especially the Surah Al-Hamd, especially the Bismillah, and especially the Ba. There are 4 lectures I'm referring to. G. Okay, sir, I don't have a question. याली मदर, अपना ये जमात खान में गटपाट का दौरा का मतलब क्या? I'm sorry, आवाज नहीं आई सही तरह. जमात खाने में गटपाट का दौरा देने में आता है, तो उसका मतलब क्या है? गलपाट का दौरा देने में आता है. आप जो वो क्या कहते हैं, स्ट्रिंग देने में आती है, उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, जब भी किसको कोई तकलीफ आती है तो अपन को बोलते, अपन को ईमान हाजी इमाम के ऊपर विश्वास है, फिर भी गटपाट का दौरा क्यों देने में आता है?
जब धागा कोई समझो कोई किसको कोई बीमारी होए, कोई आफत होए, कोई तकलीफ होए, तो मुखी साहब के पास घटपाट का दौरा देने में मांगते हैं उन लोग। जी जी जी, मैं समझ गया। तो जी हाँ, जी तो जी उसके बारे में जरा समझो प्लीज। जी जी, okay. So my friend is asking about an old tradition in which people or the murid or the followers would go to the prophets, imams, hujjatan, peers, or dais, or mukhi sahib in our case, and they will ask for something which they can hang on to, hold, something tangible, something firm to hold on. He is absolutely right कि हमारा ईमान जो है वो इमाम के ऊपर है, लेकिन फिर भी हम कोई एक ऐसी चीज मांगते हैं, और जब मैं कहता हूं हम से मुराद है कि कुछ लोग, ओके, नॉट सब के सब, कुछ लोग, क्योंकि हर आदमी का ईमान अलग अलग तरीके से काम करता है। कुछ को बातीन के अंदर कुछ चीजें चाहिए, कुछ को जाहिर में टेंजिबल, समथिंग दैट दे कैन पुट इन देयर हैंड एंड फील, उसके लिए वो दौरा देते हैं ताकि वो दौरा बांधे, वो दौरे को पकड़कर वो कह सके कि मौला मेरे साथ है। दे नीड समथिंग टेंजिबल। उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो अलग अलग किस्म के मोमिनीन होते हैं जो अलग अलग तरीके से इमाम को पकड़ते हैं। कुछ इमाम को बातिन में पकड़ते हैं, कुछ इमाम के दामन को जाहिर में पकड़ते हैं, कुछ इमाम के दामन को जमात खाने से पकड़ते हैं, कुछ इमाम के दामन और ब्लेसिंग को गटपाट के दौरे से पकड़ते हैं। आपने देखा, ये अलग अलग तरीके हैं एक मोमिन को, इसमें कोई खराबी नहीं है। ये अलग अलग तरीके से लोग इमाम के दामन को पकड़ने के लिए और उसकी ब्लेसिंग को देखने के लिए, उसको फील करने के लिए वो मांगते हैं। जी, in our old tradition in America, you may not even see that. In old tradition in Pakistan, India, you will find this kind of things, and there is nothing wrong with it. It is okay. It is depending on your way of following and hanging on to Imam's blessing. Ji. थैंक यू। So do you want to end the session here? We're already going into the overtime. Yes. We have yeah, gone into overtime. Yali Mother, Sahib, I have one question. When we say to the friends that don't worry, I'll pray for you, and of course we pray to Mola Bapa, but when Mola Bapa say that don't worry, I'll pray for you, so who does Mola Bapa pray for to? So yeah, look at my two hands, okay? Mm-hmm. So you will understand this. This hand, when we Mm-hmm. say we pray for you, is for Mm-hmm. taking. When Mola Bapa say I'm praying for you, is giving. Okay. Okay? So Imam pray is in the sense of giving, and Momin pray is in sense of taking. इसका ये मतलब होता है। जी। Thank you, Mr. Sahib. I really enjoyed the class. Thank you for joining. Good Thank job. you everybody for joining. It has been really happiness of Nachis and Garib, and I'm sorry I was missing for a few days, and I'm happy to be back. Thank you everybody. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Yali Yali Madad. We missed you a lot.